1. Applaud, verb. इजहार पसंदीदगी करना, ताली बजाकर सराहना. Show approval or praise by clapping. 2. Zeal. जोश, इश्तियाक, सरगर्मी के साथ. Great energy or enthusiasm in pursuit of a cause or an objective. 3. Rapacious, adjective. शिकार खेलना, शिकारी, लुटेरा. Aggressively greedy or grasping. 4. Excess, noun. तजावुज, हद से ज्यादा. An amount of something that is more than necessary, permitted, or desirable. 5. Trickery, noun. फरेब, जालसाजी, धोखाधड़ी. The practice of deception. 6. Pragmatic, adjective. हकीकत पसंदी, अमलियात. Dealing with things sensibly and realistically in a way that is based on practical rather than theoretical considerations. 7. Conspicuous, adjective. नुमाया, वाजे, खुलम खुला. Clearly visible. 8. Misery, noun. बदनसीबी, तकलीफ, ख्वारी. A state or feeling of great physical or mental distress or discomfort. 9. Signify, verb. मानी होना, इशारा का इंतजार, मतलब होना, जताना. Be an indication of. 10. Emphatic, adjective. जोरदार, ताकीदी अंदाज में कहना. Expressing something forcibly and clearly. 11. Rapacious, adjective. शिकार खेलना, शिकारी, लुटेरा. Aggressively greedy or grasping. 12. Staggering. हैरत अंगेज. Causing great astonishment or amazement. 13. Enormous, adjective. बहुत बड़ा, गैर मामूली, बहुत ज्यादा. Very large in size, quantity, or extent. 14. Deliberately, adverb. Consciously and intentionally, on purpose. 14. Damning, verb. नुकसानदेह. दायमी सजा याफ्ता. Of a circumstance or piece of evidence, strongly suggesting guilt or error. 16. Embolden, verb. हौसला अफजाई करना, उभारना. Give someone the courage or confidence to do something. 17. Dismantle, verb. जड़ से उखेड़ना, मुनहदिम, नंगा करना. Take a machine or structure to pieces. Mr. Dar's Pointless Jihad. Pervez Hoodbhoy Dawn Editorial, with Urdu translation. Published on December 17, 2022. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Finance Minister Ishaq Dar has taken on the ungodly, un-Islamic, interest-charging banks of Pakistan. Your days are numbered, he thunders, because our government will implement the Federal Shariat Court's ruling to end bank interest by December 31, 2027. On his orders, appeals challenging the FSC judgment made by the State Bank and National Bank will be withdrawn. Some will applaud Mr. Dar's newfound religious zeal, others will find this crass opportunism. With national elections around the corner, and with PMLN's arch-rival Imran Khan having pushed politics rightward, this smells of one-upmanship. Every politician in the government or opposition, clean or corrupt, wants to prove his sainthood. But most readers will simply yawn, they've heard it before. Way back in 1991, the FSC had ordered Pakistan's economy to dump interest within 12 months. Nothing happened. So recycling an order from 30 years later is no big deal. Let's imagine that Dar wins. Rewards or penalties for him in the hereafter cannot, of course, be known. But this will not end ideological bickering on what interest-free banking actually is. Its two versions, soft and hard, are totally incompatible opposites. Pakistan's poor are poor because of rapacious elites, not because of riba or bank interest.
In the first, at the end of a stipulated period the depositor expects, and receives, a sum exceeding his initial deposit. In another country, the excess is known as interest, but in Pakistan they call it profit. The depositor is clueless about wheeling dealings inside board rooms and management offices. Nevertheless, heavy use of Arabic words and absence of interest gives an Islamic veneer to the bank. The hard version is uncompromising. In 2014, the top ulama of the Fiqh Majlis declared that so-called Islamic banking merely relabels interest as profit and so is halal, legalistic trickery. They point to the explicit Quranic injunction, Allah has permitted trade and has forbidden interest, 2:275. Forbidden, they say, is not negotiating low or middle or high. Forbidden means zero, haram is haram and interest is usury. The influential Maulana Taqi Usmani, among others, takes this position. Bangladesh's finance minister, Dr. Abul Muhith, is blunter. He says Islamic banking deceives Muslims and is all fraud. Early Muslim scholars thought similarly and had equated interest with usury. Since banks rely on income, banking in Muslim lands was absent until very recently. This impeded industrialization, leaving Muslim countries far behind Europe. Eventually, realizing that global trade and commerce are impossible without these Western innovations, Turkish and Egyptian rulers soft-pedaled religious restrictions. The very first bank in a Muslim country was the Imperial Ottoman Bank, 1856, followed by the Egyptian Arab Land Bank, 1880. Pragmatic rulers first sought muftis willing to rubber-stamp European-style banking. Else they found those who could invent new definitions or rules. Pakistan is doing similarly. Commercial banks repackage global financial products with some changed conditions. After a board of clerics chosen by the bank approves a product, it is advertised as Sharia compliant. This sanctifies credit cards, derivative products, cross-currency swaps, equity swaps, adjustable mortgages, etc. Are Bitcoin and cryptocurrency halal or haram? Believe whichever you prefer, muftis abound on either side. One central fact, however, cannot be hidden. Commercial banks in a capitalist economy are profit-making businesses for their owners and shareholders. For this to happen, customers must be drawn into owning more cars, bigger houses, and fancy stuff. If fish could somehow pay, banks would be advertising deals for underwater TVs with 60-inch plasma screens. Hence a much larger question, is it morally right for a bank to encourage conspicuous consumption amidst an ocean of poverty? The poorest and richest Pakistanis are denizens of different worlds that are poles apart in literacy levels, health outcomes, and living standards. Urban slums reeking in misery stand in stark contrast to DHAs for the ultra-rich or those just out of uniform. When banks, Sharia-compliant or otherwise, persuade people to borrow more and consume more, does it signify devotion to God? The answer, of course, should be an emphatic no. Indeed, the larger FSC judgment states that Pakistan as an Islamic state must have an equitable economic system free from exploitations and speculations. But what on earth does riba have to do with present-day inequities of wealth? Even as it flaunts religious symbols, Pakistan's rapacious elite enriches itself through state capture. According to the 2021 UNDP report, insider dealings yielded a staggering $17.4 billion in the form of subsidies to the military, corporate sector, property developers, feudal landlords, and the political class. Even this enormous figure pales before the vast wealth of Pakistan's real estate, estimated at around $300 to $400 billion. Much of this came from kicking peasants off the lands they once tilled. Land reforms promised by Ayub Khan and Zulfikar Ali Bhutto never happened. The FSC drove the final nail in the coffin in March 1990. Decreeing that land reform violates Islamic principles, it asserted the absolute right of a Muslim to limitless wealth. This flatly contradicts its own ruling on creating an equitable economic system. Mr. Dar's victory will open another question: how is Pakistan to deal with the outside world after January 1, 2028?
The FSC judgment is explicit. The government is directed to adopt Sharia-compliant modes in the future while borrowing either from domestic or from foreign sources. Realistically, can Pakistan actually choose who to borrow from? For a country teetering at the edge of default, the answer is no. FSC's religious scholars optimistically say, China is also willing to utilize the Islamic mode of financing for CPEC projects. But do they know how intensely China dislikes Islamic symbols? And that it is deliberately erasing the Islamic identity of Uyghur Muslims? To conclude, Mr. Dar's jihad to eliminate bank interest is a bid to distract from the grimness of the present economic landscape and the damning inequities therein. In fairness to him, fixing fundamental problems such as the small tax base, high indirect taxation, and heavy consumption of imported luxury items is beyond his pay scale. But such posturing could further embolden those, such as the fast-rising TTP, who seek to dismantle Pakistan and recreate it as a theocratic state. As such, it is a step backward. The writer is an Islamabad-based physicist and writer. Published in Dawn, December 17, 2022. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. वजीर खजाना इसहाक डार ने पाकिस्तान के बेदीन, गैर इस्लामी, सूदखोर बैंकों को आड़े हाथों लिया। अब के दिन गिने जा चुके हैं, वो गरजते हैं, क्योंकि हमारी हुकूमत 29 दिसंबर 2027 तक बैंक सूद खत्म करने के वफाकी शरी अदालत के फैसले पर अमल दरामद करेगी। उनके हुक्म पर स्टेट बैंक और नेशनल बैंक की जानिब से FSC के फैसले को चैलेंज करने वाली अपीलें वापस ली जाएंगी। कुछ लोग डार के नए पाए जाने वाले मजहबी जोशो खुरूश की तारीफ करेंगे। दूसरों को ये क्रास मौका परस्ती मिल जाएगी। कौमी इंतखाबात करीब हैं और मुस्लिम लीग नून के कट्टर हरीफ इमरान खान ने सियासत को दाएं जानिब धकेल दिया है, इसलिए इससे वन अपमैनशिप की बो आती है। हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ का हर सियासतदान, चाहे वो साफ सुथरा हो या बदउनवान, अपनी संद साबित करना चाहता है। लेकिन ज्यादातर क़ारीन सिर्फ जमाई लेंगे, उन्होंने इससे पहले सुना है। 1991 में FSC ने पाकिस्तान की मईशत को 12 माह के अंदर सूद खत्म करने का हुक्म दिया था। कुछ नहीं हुआ। लिहाजा साल बाद के आर्डर को रिसाइकल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आइए तसव्वुर करते हैं कि डार जीत जाता है। आखिरत में इसके लिए अजर व सवाब का इल्म नहीं हो सकता, लेकिन इससे इस बात पर नजरियाती कशमकश खत्म नहीं होगी कि सूद से पाक बैंकारी दरअसल किया है। इसके दो वर्जन, नरम और सख्त, मुकम्मल तौर पर मुतजाद हैं। पाकिस्तान के गरीब अशराफिया की वजह से गरीब हैं, सूद और बैंक सूद की वजह से नहीं। सबसे पहले एक मुकर्ररा मुद्दत के इख्तिताम पर जमा कुनिंदा तवक्को करता है और वसूल करता है इसके इब्तिदाई डिपॉजिट से ज्यादा रकम। दूसरे मुल्क में इस ज्यादती को सूद कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में वो उसे मुनाफा कहते हैं। डिपॉजिटर बोर्ड रूम्स और मैनेजमेंट दफातर के अंदर व्हीलिंग डीलिंग के बारे में लाइल्म है। इसके बावजूद अरबी अल्फाज का भारी इस्तेमाल और सूद की अदम मौजूदगी बैंक को एक इस्लामी लिबास फराहम करती है। हार्ड वर्जन नाकाबिल तलाफी है। 2014 में फ़िक़ही मजलिस के सरकर्दा उलमा ने ऐलान किया कि नाम निहाद इस्लामी बैंकारी महज सूद को मुनाफा के तौर पर दोबारा लेबल लगाती है और इसी तरह हयाल कानूनी फरेब भी है। वो वाज़ेह कुरानी हुक्म की तरफ इशारा करते हैं, अल्लाह ने तिजारत की इजाज़त दी है और सूद को हराम किया है। 275। उनका कहना है कि हराम का मतलब कमा दरमियानी या ज्यादा मुज़ाकरात नहीं करना है। हराम का मतलब सिफर है, हराम हराम है और सूद सूद है। बासर मौलाना तक़ी उस्मानी वगैरह ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। बांग्लादेश के वज़ीर ख़जाना डॉक्टर अबू अलमाउस इससे कहीं ज्यादा दो टोक हैं। उनका कहना है कि इस्लामी बैंकारी मुसलमानों को धोखा देती है और ये तमाम धोखा दही है। इब्तिदाई मुसलमान उलमा का भी यही ख्याल था और उन्होंने सूद को सूद से तशबीह दी थी। चूंकि बैंक आमदनी पर इन्हिसार करते हैं, इसलिए हाल ही में मुस्लिम ममालिक में बैंकारी का फुकदान था।
इससे सनतकारी में रुकावट पैदा हुई और मुस्लिम ममालिक यूरोप से बहुत पीछे रह गए। आखिरकार ये एहसास करते हुए कि इन मगरबी इख्तिरात के बगैर आलमी तिजारत और तिजारत नामुमकिन है, टर्क और मिस्री हुक्मरानों ने नरम पैदल मजहबी पाबंदियों को नरम कर दिया। किसी मुस्लिम मुल्क में पहला बैंक इंपीरियल उस्मानी बैंक 1856 था, जिसके बाद मिस्री अरब लैंड बैंक 1880 था। अमली हुक्मरानों ने सबसे पहले यूरोपी तर्ज की बैंकारी पर रबर स्टैंप लगाने के लिए तैयार मुफ्तियों की तलाश की, वरना उन्हें वो लोग मिल गए जो नई तारीफें और उसूल ईजाद कर सकते थे। पाकिस्तान भी ऐसा ही कर रहा है। तिजारती बैंक कुछ तब्दील शुदा शराइत के साथ आलमी मालियाती मसनूआत को दोबारा पैक करते हैं। बैंक के जरिया मुंतखब करदा उलमा के एक बोर्ड के बाद किसी मसनू की मंजूरी के बाद से शरीयत के मुताबिक इश्तिहार दिया जाता है। ये क्रेडिट कार्ड्स, मुश्तक मसनूआत, क्रॉस करेंसी सवीप, इक्विटी सवीप, साठ रहन वगैरह को पाक करता है। बट कवाएं और करपिटो करेंसी हलाल है या हराम, जिसको तुम पसंद करते हो इस पर यकीन करो। दोनों तरफ मुफ्तियान किराम की भरमार है। ताहम एक मरकजी हकीकत को छुपाया नहीं जा सकता। सरमायादाराना मईशत में तिजारती बैंक अपने मालिकान और हिस्सस याफ्तगान के लिए मुनाफा बख्श कारोबार है। ऐसा होने के लिए ग्राहकों को ज्यादा कारों, बड़े घरों और फैंसी चीजों के मालिक होने में तैयार किया जाना चाहिए। अगर मछली किसी तरह अदायगी कर सकती है तो बैंक 60 इंच प्लाज्मा स्क्रीनों के साथ पानी के अंदर टीवी के लिए इश्तिहारात के सौदे करेंगे। लिहाजा एक बहुत बड़ा सवाल, क्या ये अखलाकी तौर पर सही है कि एक बैंक गुर्बत के समंदर के दरमियान नुमाया खपत की हौसला अफजाई करे? गरीब तरीन और अमीर तरीन पाकिस्तानी मुख्तलिफ दुनियाओं से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं जो खानदगी की सतह, सेहत के नताइज और मेयार जिंदगी के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। शहरी कच्ची आबादियां जो बदहाली का शिकार हैं, इंतहाई अमीरों है या वर्दी से बाहर रहने वालों के लिए BHA के बिल्कुल बरक्स हैं। जब बैंक शरीयत के मुताबिक या दूसरी सूरत में लोगों को ज्यादा कर्ज लेने और ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए कायल करते हैं, तो क्या यह खुदा की बंदगी को जाहिर करता है? इसका जवाब जाहिर है, एक जबरदस्त नहीं होना चाहिए। दरहकीकत FSC के बड़े फैसले में कहा गया है कि एक इस्लामी रियासत के तौर पर पाकिस्तान में इस्तेहसाल और क़ियास आराइयों से पाक एक मुनसिफाना माशी निज़ाम होना चाहिए। लेकिन रोए ज़मीन पर सूद का मौजूदा दौर के दौलत की अदम मुसावात से क्या ताल्लुक है? अगरचे ये मजहबी अलामतों की नुमाइश करता है, लेकिन पाकिस्तान की जुनूनी अशराफिया रियासती कब्जे के जरिए खुद को मालामाल करती है। UNDP की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक अंदरूनी लेन देन से फौज, कारपोरेट सेक्टर, प्रॉपर्टी डेवलपर्स, जागीरदारों और सियासी तबके को सब्सिडी की शक्ल में 17.4 अरब डॉलर हासिल हुए। यहाँ तक कि यह बहुत बड़ा आदाद शुमार पाकिस्तान की रियल एस्टेट की वसी दौलत से पहले भी कम है, जिसका तखमीना तकरीबन 3,004,000 बिलियन डॉलर है। इसमें से ज्यादातर किसानों को इन जमीनों से लात मारने से आया था जो वो कभी खेती करते थे। अयूब खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ने जमीनी इस्लाहात का जो वादा किया था वो कभी पूरा नहीं हुआ। FSC ने मार्च 1990 में ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी, ये हुक्म देते हुए कि ज़मीनी इस्लाहात इस्लामी उसूलों की खिलाफ वर्जी करती हैं। इसने एक मुसलमान के लामहदूद दौलत के मुतलक हक पर जोर दिया। ये एक मुनसिफाना माशी निज़ाम बनाने के अपने फैसले के बिल्कुल बरक्स है। इसहाक डार की जीत से एक और सवाल पैदा होगा कि 1 जनवरी 2028 के बाद पाकिस्तान को बैरूनी दुनिया से कैसे निपटना है। FSC का फैसला वाज़ेह है। हुकूमत को हिदायत की जाती है कि वो मुस्तकबिल में मुल्की या गैर मुल्की ज़राए से कर्ज लेते वक्त शरीयत के मुताबिक तरीकों को अपनाए। हकीकत यह है कि क्या पाकिस्तान असल में ये इंतखाब कर सकता है कि किससे कर्ज लेना है? डिफ़ॉल्ट के किनारे पर टेटरिंग करने वाले मुल्क के लिए इसका जवाब नहीं है। FSC के मजहबी स्कॉलर्स पर उम्मीद अंदाज में कहते हैं, चीन भी CPEC मंसूबों के लिए माली एआनत के इस्लामी तरीके को इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या वो जानते हैं कि चीन इस्लामी अलामतों को कितनी शिद्दत से नापसंद करता है, और ये कि ये जानबूझकर गैर मुसलमानों की इस्लामी शनाख्त को मिटा रहा है?
आखिर में बैंक सूद को खत्म करने के लिए दार का जिहाद मौजूदा माशी मंजरनामे की संगीनी और इसमें बदतरीन अदम मसावात से तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। इनके लिए मुनसिफाना तौर पर बुनियादी मसाइल जैसे छोटे टैक्स 20, आला बिलवास्ता टैक्स और दरामदशुदा ऐशो आराम की अशिया की भारी खपत को हल करना उनकी तनख्वाह के पैमाने से बाहर है। लेकिन इस तरह का रवैया इन लोगों को मजीद हौसला दे सकता है, जैसे तेजी से बढ़ती हुई टीटीपी जो पाकिस्तान को खत्म करने और इसे एक मजहबी रियासत के तौर पर दोबारा तख्लीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह ये एक कदम पीछे है। मजमून निगार इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले तबीयात दान और मुसन्निफ हैं। दान अखबार में शाये शुदा 17 दिसंबर 2022। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.